Hello learners, I am Baljinder Kaur. Firstly, do like and share the videos and subscribe to the channel Kaur Baljinder. In this video, I will discuss about Markentia. So, moving on to the first slide, it talks about the classification of Markentia. Markentia belongs to division Bryophyta, class Hepaticopsida, order Markentiales, family Markentiaceae, genus Markentia. नेक्स्ट इज गेमिटोफाइटिक जनरेशन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मीडियन ग्रूव शो करता है राइजॉइड एंड स्केल्स अटैच्ड होते हैं राइजॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेट स्केल्स आर ऑफ टू टाइप्स अपेंडिकुलेट एंड लिग्युलेट अब स्मूथ वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ट्यूबरकुलेट की क्या क्या हैं अपेंडिकुलेट स्केल की क्या क्या हैं लिग्युलेट स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ये जानना है और नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वेल एक्सप्लेन्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक फोटोग्राफ है उससे फिगर है उससे सब क्लियर हो जाएगा स्मूथ वॉल राइजॉइड इनर वॉल स्मूथ lining cells fix the plant body to the substratum and absorb water and soil solute. Tuberculate peg like in growth in their cell inner walls living in the beginning but lack protoplasm at maturity helps to retain moisture in the ventral surface and carry water to all the absorptive parts. नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्केल्स पर अपेंडिकुलेट एंड लिगुलेट अपेंडिकुलेट स्केल्स लार्ज wedge shaped bear an appendage at their tips ligulate simple small tongue shaped and without appendage scales secrete mucilage and protect the growing point from desiccation in this figure tuberculate rhizoid, smooth word rhizoid, tuberculate rhizoid internal view, appendiculate scale and ligulate scale are shown. Labeling A, B, C, D, E respectively. Next is reproduction. सबसे पहले हम vegetative reproduction की बात करेंगे. Fragmentation, adventitious branches. Third is the gemma. Produced inside the gemma cups. These cups are produced on the dorsal surface of thallus. Sexual reproduction पे आ जाते हैं oogamous type. All the species are dioecious. Male sex organs are antheridia and female sex organs are called archegonia. The antheridophore. सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रीडियोफोर की उसके बाद हम बात करेंगे आर्किगोनियोफोर की. एंथ्रीडियोफोर Antheridophore differentiated into a long stalk and a terminal disc. Disc is 8-lobed. Upper zone of disc consists of air chambers alternating with entheridial chambers. Air chambers possess assimilatory filaments which perform photosynthesis. Entheridia are born singly inside the entheridial chambers. Entheridia are born in acropetal succession. Dehiscence of entheridia. Dehiscence is in presence of water provided by rain or dew drops. At maturity, the pore of entheridial chamber becomes wide open through which water enters and fills the chamber. The body of entheridium encloses a mass of free entherozoids which float in a viscous fluid formed by dissolution of cell walls of androcytes. Sterile jagged cells imbibe water, become softened, get disorganized. Antherozoids ooze out in mass through an opening. They escape through the pore of entheridial chamber and come to the surface of disc. Antherozoids swim in the film of water. The archegoniophore. It is the reproductive branch bearing archegoniophore. It is differentiated into stalk and disc. Disc consists of 8 lobes directed away from the center. The archegonia develop on the upper surface of disc and arranged in 8 rows. After fertilization, central portion of disc bulges out and becomes convex, pushing the archegonia at the periphery. The archegonia are inverted and hang downward from the tissue of disc. Each archegonium has an extra sheath called perigonium. Each growth
group of Archegonia is enclosed within a two-libbed curtain-like involucre called pericytium, or you can say pericytium. फिगर देख के सब कुछ क्लियर हो रहा है? कहीं डाउट आता है तो उसी को, इस वीडियो को पॉज करके सुन के दोबारा से वीडियो को जूम, फोटो फिगर को जूम करके आप क्लियर कर सकते हैं अपना पॉइंट, अपना डाउट. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्किगोनियम. मैच्योर आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड. इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट फ्यू celled stalk, a globular venter, and a long neck. The apical part of neck is covered by four cover cells. The swollen venter consists of single layered jacket and encloses a venter canal and a large egg. इस फिगर में मार्केंशिया के सेक्स ऑर्गन्स दिखाए गए हैं. दोनों का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. ए पार्ट में एंथ्रीडोफोर का और बी पार्ट में आर्किगोनियोफोर का. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन की. स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर स्पोरोगोनियम. ईच स्पोरोगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि फुट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सीटा की क्या है और कैप्सूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है. It is enclosed within a protective covering called calyptra. The other protective covering are perigynium, which encloses single sporogonium, and pericytium or pericytium you can say, which covers the group of sporogonia. Foot, it anchors the sporogonium and absorbs water and nutrients from the gametophyte. Seta, it connects the capsule with foot. Capsule, it has single layered wall enclosing a mass of spore and elaters. What are elaters? They are hygroscopic in nature and help in spore dispersal. इलेटर्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्टिव और एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव टाइप में. व्हाट आर इलेटर्स, क्या फंक्शन प्ले करते हैं ये? दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड दे हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल. आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट. द स्पोरोफाइटिक जनरेशन ऑफ लाइफ साइकिल एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. द स्पोर्स आर कैरिड अवे विंड और रेन. Second last is young gametophyte. Spore is the first cell of gametophytic generation. Spore has thick wall differentiated into outer thick exine and inner thin entine. Each spore mother cell of Markensia produces four spores, out of which two develop into male thalli and two develop into female thalli. Thus Markensia shows physiological heterospory. Last slide talks about alternation of generations. Since the plant bodies of two generations are morphologically dissimilar, it is called heterologous type of alternation of generation, and the life cycle is diplohaplontic. एग्जाम्पल पूछा जाता है कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल बताइए, तो उसमें आता है मार्केंशियल. और साथ के फिगर में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल लाइफ साइकिल दिखाया गया है. मार्केंशिया का फोटो गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन दिखाया गया है. इसको आप वीडियो को किसी भी पॉइंट पे जो ना समझ में आया हो, पॉज करके, रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके किसी भी तरह देख सकते हैं. पॉइंट को दोबारा सुन सकते हैं. और नोट्स आपको प्रिपेयर्ड मिले हैं इस मार्केंशिया टॉपिक के प्रेजेंटेशन के थ्रू, और फिगर भी. सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स मैंने इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करी हुई है.